नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया और आप जानते हैं देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी पर ताल ठोक में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि शिंदे गुट पर किसी भी वक्त बड़ा फैसला आ सकता है। 4:30 बजे स्पीकर को फैसला सुनाना था, लेकिन अभी तक इंतजार हो रहा है कि स्पीकर कब आएंगे, फैसला सुनाएंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव इस वक्त महाराष्ट्र विधान परिषद की और विधानसभा की, और सेंट्रल हॉल में ये पूरा का पूरा फैसला पढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है 1200 पेजेस का ये फैसला है और इसके आधार पर तय होगा कि एकनाथ शिंदे सदस्य रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। थोड़ी देर में ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे विधानसभा के स्पीकर। विधानसभा पहुंच गए हैं शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता, लेकिन एकनाथ शिंदे इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या उनकी रैली का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है? क्या चीजें हैं अभी इसके ऊपर हम पल पल का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजे हुए कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी स्पोक्स पर्सन में एक हुआ करते थे एक जमाने में। अब जो है पढ़ना फैसला किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जी हाँ, तो मामला क्या है? 4 महीने बाद देश को नई सरकार चुननी है, लेकिन आज महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार की सांसें ऊपर नीचे है। तय होने जा रहा है कि 1.5 साल पहले शिवसेना तोड़कर जिस तरह से सरकार बदली वो सही था या गलत। एकनाथ शिंदे की बगावत का पैटर्न सही था या गलत? उन्हें योग्य मानना चाहिए या अयोग्य ठहराकर कुर्सी से उतारा जाना चाहिए? सबकी नजरें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर है। थोड़ी देर में स्पीकर राहुल नार्वेकर इस पर फैसला देने वाले हैं। बैकग्राउंड आपको पता है कि चुनाव आयोग ने शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना माना था, लेकिन उद्धव ठाकरे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। आज उसी पर फैसले की घड़ी है। शिंदे और बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे इस फैसले से पहले ही बता रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है। बीते दिनों स्पीकर राहुल नार्वेकर 2 बार सीएम एकनाथ शिंदे से मिले थे। उसी को लेकर उद्धव ने भूमिका तैयार कर ली है कि जज और आरोपी में सेटिंग हो चुकी है और फैसला खिलाफ आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि सरकार को खतरा नहीं है। अटकलें है कि शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य हुए तो भी बीजेपी के पास प्लान भी तैयार है। वो शिंदे की जगह अजीत पवार को बना सकती है। बीजेपी और अजीत पवार के नंबर भी इसलिए पर्याप्त हैं, लेकिन यह भी सवाल है कि एनसीपी से अजीत पवार की बगावत पर 21 दिन बाद फैसला आना है, तो तलवार अजीत पवार पे भी लटकी हुई है। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे को शपथ दिलवाकर, इस्तीफा दिलवाकर, उनकी फिर शपथ करवाकर विधान परिषद से लाया जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस प्लान पे काम करेगी? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड यही बोला है कि एकनाथ शिंदे की जो मुख्यमंत्री पद है उसमें ही ये कार्यकाल पूरा होगा, क्योंकि नंबर सभी बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त जो है बीजेपी के पास, जिसके अंदर शिंदे गुट है, जिसके अंदर अजीत पवार गुट है, और ये देखिए शक्ति प्रदर्शन होता हुआ, शक्ति प्रदर्शन जब हुआ था, जब शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी, शिवसेना के साथ बगावत की थी, उनकी पार्टी को असली शिवसेना माना गया। तो ये देखिए एकनाथ शिंदे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। शिंदे पर फैसला उल्टाया तो क्या वही फैसला अजीत पवार मामले में नजीर नहीं बनेगा? क्योंकि अगर शिंदे डिस्क्वालीफाई हुए तो अजीत पवार को डिस्क्वालीफाई होना ही पड़ेगा। ऐसे में अजीत पवार खुद कितने दिन योग्य रह पाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अब यहां पर क्या क्या है? यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो है विकल्प में, ठीक है, अंकुर त्यागी और वैदेही कार्डिकर 2 रिपोर्टर मेरे साथ हैं। अंकुर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्यों देर हो रही है फैसला सुनाने में? देखिए, फिलहाल तो जो पता चल पा रहा है, देर की वजह तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष खुद अपने कैबिनेट में बैठे हुए हैं और दोनों गुटों के जो कुछ नेता हैं, जो ठाकरे गुट और शिंदे गुट, दोनों गुटों के नेता भी उनके साथ बैठे हुए हैं। उनके बीच में आपस में चर्चा चल रही है। अब किस बात को लेकर है? क्या ये प्री रिजल्ट काउंसलिंग का एक दौर चल रहा है या कुछ और हो रहा है? लेकिन फिलहाल ये तय है कि आपस में सब मिलकर एक कैबिनेट में बैठकर इनके बीच में कुछ चर्चा जरूर चल रही है। थोड़ी देर के बाद नजर लगाया जा रहा है। पहले 4 बजे का वक्त आया था, फिर 4:30 बजे का हो गया। अब हम 5 बजे फैसले के आने का इंतजार कर ही रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई ऐसा क्लियर नहीं इंडिकेशन आया है कि कब, कितने बजे, अभी आने वाले कितनी देर में ये फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके सूत्र क्या कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि फिलहाल जो है वो देरी इस कारण हो रही है क्योंकि राहुल नार्वेकर अपने केबिन में दोनों गुट के वकीलों से बातचीत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर कोई भी निर्णय आए तो उस पर कोई आपत्ति ना जताए। अगर कुछ बातें हैं तो वो आपस में सुलझी जा सकती है, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ बातें सामने ना आए, ऐसी बात जो है वो राहुल नार्वेकर दोनों गुट के वकीलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल हॉल में दोनों गुट की ओर से जो है वो विधायक एक साथ बैठकर गप्पे भी मार रहे हैं, ऐसी भी बात जो है वो फिलहाल सामने नजर आ रही है। यानी दोनों गुट में जो है वो काफी बड़ा मतभेद है, काफी बड़ा विवाद है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल हॉल में जब आज निर्णय आना बाकी है तो दोनों गुट के विधायक एक साथ बैठकर यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा भी चित्र ऊपर सेंट्रल हॉल में है। ठीक है, वैसे ही आप अपने सूत्रों के साथ बने रहिए। अश्विन मेरे साथ नए रिपोर्टर जुड़ गए हैं। अश्विन, आपके सूत्र क्या बताते हैं? आज तो सूत्रों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा जब तक राहुल नार्वेकर प्रकट नहीं होते हैं और विधानसभा स्पीकर महोदय जो है अपनी बात शुरू नहीं कर देते हैं। दीपक जी, जब आप हेडलाइन पढ़ रहे थे तो उस वक्त मेरी एक विधायक से बात हुई जो इस वक्त अंदर सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं। उनके मुताबिक डिले का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक चेयर पर अध्यक्ष नार्वेकर नहीं पहुंचे हैं और यही वजह है कि अभी तक जो आप लोग को लिंक दिया गया था वो अभी ऑन नहीं हुआ है। हम सभी इंतजार करें, ऐसा उनका कहना था कि वो सभी इंतजार कर रहे हैं सेंट्रल हॉल में बैठकर। थोड़ी देर में उनसे कहा भी गया है कि थोड़ी देर में जो है अध्यक्ष आएंगे और फैसला जो है पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि अंदर कोई टेक्निकल जो है गड़बड़ी फिलहाल नहीं है। कुछ जो है अलग वजह हो सकती है जो अंदर मौजूद विधायकों के और बाकी नेता जो मौजूद हैं उन्हें नहीं बताया गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि थोड़ी देर में अध्यक्ष आएंगे और अपना फैसला जो है पढ़कर सुनाएंगे। टेक्निकल जो तैयारियां थी, यानी कि ये जो फैसला जब पढ़ा जाएगा तो सारी चीज लाइव होगी, तो ऐसे में वो सारी तैयारियां कर रखी गई। सिर्फ इंतजार है राहुल नार्वेकर का सीट पर आने का और जैसे ही वो चेयर पर आते हैं अपना फैसला जो है पढ़ना शुरू करेंगे, उसके लिए पूरी तैयारी जो है कर रखी गई है। जी ठीक है अश्विन, आप लोग डटे रहिए, बने रहिए। जैसे ही कोई जानकारी आए आप तुरंत बताइए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गेस्ट का एक बहुत बड़ा पैनल है इस पूरे घटनाक्रम पर और अन्य राजनीतिक घटनाओं पर बात करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजय द्विवेदी जी हैं जो कि लीडर है शिवसेना के। और मेरे साथ इसके अलावा जुड़ गए हैं विक्रम प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक सब सस्पेंस चल रहा है। तो चरण सिंह सापरा साहब, आज एक बड़ी खबर ये भी आई है, आपसे शुरू करना चाहता हूं कि सोनिया जी, अधीर रंजन चौधरी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन में नहीं जाएंगे। आपका क्या कहना है, क्यों नहीं जाएंगे? क्या कारण बताया है कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली? देखिए, कारण उसी ये एको आ रहा है, एको निकल रहा है। मैं ठीक कराता हूँ, इको ठीक कराइए प्लीज। कारण उसी ट्वीट में दिया गया है कि जिस तरह से ये नजर आ रहा है कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है 22 तारीख को, यानी रामलला तो सबकी आस्था है और जो हमारा धर्म है वो एक व्यक्तिगत मामला भी होता है। और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस प्रायोजित नजर आ रहा है, तो रामलला तो वही है, होने दो प्राण प्रतिष्ठा। हम रामलला के दर्शन बाद में भी कर सकते हैं। ये तो वीआईपी कार्यक्रम है। जब आम जनता दर्शन करेगी तो आम जनता के साथ में जाकर के कांग्रेस का नेतृत्व भी दर्शन करेगा। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि ये हमारी अपनी आस्था का मामला है। रामलला सबके हैं, कण कण में राम है और हम सब चाहते हैं कि वहां पर भव्य दिव्य मंदिर बने और वो बन रहा है। लेकिन दर्शन हम आम जनता के साथ में करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम में हम नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है सुधांशु जी, आपका एक जवाब, फिर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जाएंगे। देखिए, वास्तविकता यह है कि 1949 में मूर्तियां प्रकट होने से लेके अनवरत कांग्रेस और आज के जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वो सदा सर्वदा से राम जन्मभूमि के मार्ग में जितने अवरोध उत्पन्न कर सकते थे सब करने का प्रयास किया। नैतिक दृष्टि से भी किया, राजनैतिक दृष्टि से भी किया, सामाजिक दृष्टि से भी किया, संवैधानिक दृष्टि से भी किया, विधिक यानी कानूनी दृष्टि से भी किया। तो कोई बात नहीं, अब बेहतर यह होता कि वो इस समय इन सारी बातों को भूलकर इस अवसर का एक उपयोग करते
परंतु दुख की बात यह है कि हर ऐतिहासिक अवसर में राजनीति देखने की जो दुखद दृष्टि, मैं दुखद दृष्टि कह रहा हूं, कांग्रेस और इन विपक्षी दलों को मिल गई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी। क्या आवश्यकता थी उनके अभिभाषण का बहिष्कार करने की? कुछ आपको हासिल भी नहीं होने वाला था उससे, ऐसा कोई बहुमत भी नहीं था कि आप भाषण का बहिष्कार करके अभिभाषण में कोई बदलाव कर लेंगे, वो किया। भारत की संसद कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल है, अभी आने वाले 150 वर्षों तक चलेगी, उसका आप हिस्सा बनने से रह गए। फिर आप देखिए इतने बड़े कानून में बदलाव हुआ, आईपीसी की धारा बदली 1860 और 1870 की अंग्रेजों के जमाने की, उसके आप हिस्सा बनने से रह गए। और अब तो 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। अरे भाई, इसमें तो अपना पराया देखना ही नहीं चाहिए था भाई। इसमें भाजपा तो छोड़िए, भगवान के द्वार पर जब व्यक्ति जाता है तो अहंकार शून्य होके जाता है, अपना सब कुछ अर्पण करके जाता है। पर वहां भी यह अहंकार का भाव था या भेद का भाव था कि यह मेरा कार्यक्रम है, कि इसमें मेरी महत्ता दिख रही है कि दूसरे की महत्ता दिख रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको कहना चाहता हूं, एक तुलसी बाबा की चौपाई है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी अगर उलट के भी बीज गलती से खेत में गिर जाता तो भी उसमें से पौधा निकल आता है। उसी प्रकार राम को रीझ के भज लीजिए तो भी आपको लाभ होगा, और खींच के भज लीजिए तो भी लाभ होगा। हम तो रीझ के भज रहे हैं पिछले कई 3 पीढ़ियों से, आप खींच के भी भज ले, शायद आपका कुछ लाभ और कल्याण हो जाता। मैं उत्तर दे दूं छोटे में? बिल्कुल बिल्कुल चरण सिंह जी, सापरा साहब बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया है और इन्होंने बातें रखी हैं, मुझे लगता है ये भूल गए कि पुरी के शंकराचार्य ने भी कहा है कि वहां पर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और मैं क्या तालियां बजाऊंगा। तो यही बात जो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं वो आदरणीय शंकराचार्य जी के लिए भी लागू होती है। और फिर हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम आम जनता के साथ में जाकर के दर्शन करेंगे ना। आप अपना वीआईपी कल्चर और आपका वीआईपी कार्यक्रम कर लीजिए। जो बीजेपी प्रायोजित या आरएसएस प्रायोजित कार्यक्रम है, निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और अगर आप देश को ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि ये बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम है और बीजेपी के कारण हो रहा है, तो ठीक है, आप अपने मार्ग पर चलिए, हम आम जनता के साथ में जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। उसमें कोई बुराई तो है नहीं। कोई बुराई है तो बताइए। बुराई है सुधांशु जी? मैं साफ कर दूं, महाराष्ट्र के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। शिंदे बचेंगे या नपेंगे, उससे पहले थोड़ा अवसर है तो सुधांशु जी और चरण सिंह सापरा साहब आमने सामने इस मुद्दे पर। सुधांशु जी देखिए, सापरा साहब, पहले तो आपने कहा शंकराचार्य जी से तुलना कर दी। आपने कह दिया कि शंकराचार्य जी का मन में यदि कोई विचार है तो इक्विवेलेंट टू सोनिया गांधी जी। दूसरी में आपने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी का पूरा बयान नहीं सुना। उन्होंने क्या कहा? मैं मोदी जी की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि वो सनातनी हिंदू तो हैं, तो कम से कम वहां पर जाकर मंदिर के उद्घाटन के लिए कार्य तो कर रहे हैं। अगर वो सेकुलर होते तो अयोध्या जाने से बचते। इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। बाकी उन्होंने कुछ शास्त्रीय विधान की बात कही तो मानवीय बात है, उस बात के ना हम जानकार हैं ना आप जानकार हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र का फैसला आने वाला है तो कानूनी मामलों के जो हम हैं ना आप हैं, तो वो कानूनी मामलों के जानकार। मैं रोकूंगा सुधांशु जी, राहुल नार्वेकर चेयर पर बैठ गए। Paragraph 1A. Again filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B, challenging the defiance of whip with regards to the speaker's election. Group number 6 consists of petition number 21, again filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B,
with regards to defiance of whip for the confidence motion. Group number 5 consists of petition number 22 to 24, which has been filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of petition number 17, which has been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the Apex Court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group. So we shall commence with group number 1. Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shiv Sena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view the factual matrix and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the 2 factions was the real Shiv Sena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification
in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those. Those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. The Constitution of Shiv Sena, 2. The leadership structure of the party, and 3. The legislative majority if 2 or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both in the previous paragraphs, I have recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the Constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party, and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the Constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2. The leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the Constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1. The 2018 Constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended Constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment and thus the said Constitution of 2018 has to be taken as the Constitution which is done with the consent of both the factions, as the said Constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said Constitution of 2018. And 4. The statement of Sri Yogesh Kadam that the filing of 2018 Constitution along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Sri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the Constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the Constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said Constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondents submitted that both the said letters do not mention anything about the purported amendments to the Constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27/2/2018 by Shri Uddhav Thackeray in the special leave petition number 3997 of 2022. However, in the said SLP, there was no mention
about the existence of any such letter dated 4th April 2018. The word submitted appearing in paragraph 168 of Subhash Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 Constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 Constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Shri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Shri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the Speaker in August 2023. Further, even the additional replies filed on 25/10/2023 in the present proceedings, the aforesaid petition has been reiterated by the respondents. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant constitution for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. A. As per the Honorable Apex Court, if both the factions have submitted different versions of the constitution of the party, then in that case, what has to be taken into account is the constitution which was submitted to the ECI with the consent of both parties before the rival factions emerged. Before recording further conclusions, I find it imperative to reiterate that, pursuant to the initiation of these disqualifications, the Maharashtra Legislature Secretariat had vide letter dated 7 June 2023 requested the Office of the Election Commission of India to provide a copy of the party constitution / memorandum / rules and regulations Constitution and rules of Shiv Sena as available on the record of Election Commission of India. Further, with respect to amendments, if any, to the said constitution of the party, the Election Commission requested the Legislature Secretariat to refer to the order dated 17 February 2023 passed by the ECI in dispute case number 1 of 2022. Having perused the same, it has to be noted that the copy of the Constitution of Shiv Sena provided by the ECI does not bear any date or year, but as per the ECI, that which is provided vide the reply is the only Constitution of Shiv Sena available on the record of the ECI. Further, with respect to the amendments, if any, to the said Constitution, the Election Commission, vide its order dated 17 February 2023, has held in paragraph 132 4B that the amended Constitution of 2018 is not on the record of the Commission. Thus, the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted, as I am bound to follow the directions of the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, and accordingly take into account the Constitution which the Election Commission has provided. In my jurisdiction under the 10th schedule of the Constitution of India, I cannot delve into any other factor while deciding which is the relevant constitution. As prima facie, it is evident from the records of the ECI that the 1999 Constitution is the one which was submitted to the ECI by the Shiv Sena before rival factions emerged. Further, it is also necessary to mention that the petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 was submitted to the ECI by referring to the letter dated 4th April 2018 cannot be accepted. A bare perusal of the said letter dated 4th April 2018, by way of which the petitioner based their claim of submission of the said Constitution to the ECI, does not bear any content which shows that an amended Constitution was submitted to the ECI. The said letter only refers to the election held and the results thereof, and nothing more. Further, no closer
on closer examination of the special leave petition filed by Mr. Uddhav Thackeray before the Honorable Supreme Court, challenging the ECI decision SLP number 3997 of 2022, I find that exactly same claim has been made about the letter dated 27/2/2018, and there is no mention about the new letter of 4th April 2018. Accordingly, said letter of 2/7/2018 is on the website of the Election Commission of India. However, there is no document relating to the Constitution annexed to it. Hence, on this ground also, petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted. Petitioner's submission that submitted before the Speaker, petitioner's submission that into inverted submitted before the Speaker would mean into inverted annexed by the petitioner and the respondents in their respective petitions and replies thereto cannot be accepted, as there is a clear provision under the 1986 rule where the leader has to submit the party constitution. Rule 3, subclause 1, subclause B of 1986 rule mandates that the leader into inverted shall furnish into inverted a copy of the rules and regulations, whether known as such or as constitution or any other name, of the political party concerned. Further, Rule 3, subclause 4 contemplates that whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the legislature party under Rule 3, subclause 1, he shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date on which such change has taken place, or written such further period, or within such further period as the Speaker may, for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Speaker with respect to such change. Thus, the submission of Constitution before the Speaker has to mean submission under Rule 3 of 1986 rules. However, till date, Shiv Sena has not submitted any constitution on the record of the speakers of the Speaker under the said Rule 3. In view of the above observations and finding, I need not further analyze any other submission in this regard made by the parties, and I hold that the Constitution of Shiv Sena provided by Election Commission of India, vide letter dated 22nd June 2023, is the relevant Constitution of Shiv Sena for determination of the preliminary issue as to which faction is the real political party. Constitution of Shiv Sena held to be the relevant constitution is hereinafter referred to as the SS Constitution. The leadership structure relevant for the determination. Learned Senior Advocate Mr. Kamath's submission that the leadership structure which is relevant for the purpose of deciding the preliminary issue is the leadership structure which is reflected in the communication dated 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena, produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. Respondents objected to such production on the ground that it is not permissible to produce affidavits of others along with petitioner's own affidavit in lieu of chief examination without the author of the said affidavits subjecting themselves to cross-examination. In any event, during the arguments, Mr. Kamath did not rely on these affidavits and limited his submissions to the 2018 leadership structure as available on the ECI website. Mr. Jethmalani, in turn, focused his submission to buttress the ground that the said leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon
for the purpose of determining the preliminary issue as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, and thus the same would be contrary to the findings of the Honorable Supreme Court in paragraph 168 of Subhash Desai. Mr. Jethmalani further relied on the legislative party leadership to submit that the legislative party also forms part of the leadership structure, as it is not only mentioned in the SS Constitution, but there is no dispute regarding the said members being part of the Pratinidhi Sabha under the SS Constitution. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant leadership structure for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. The submission of Mr. Kamath, the jurisdiction under the 10th schedule, only mandates a prima facie adjudication as to what the leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not the leadership structure available on the record of the ECI was pursuant to a validly held election is a correct position, and hence I concur with the same. Petitioner's submission that in these proceedings the respondents cannot challenge the organizational election results available on the record of the ECI, as the 10th schedule does not permit the raising of any such defense, is a correct position, and hence I am in agreement with the same. Respondent submission that the leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, does not arise at this juncture, as it is a submission which has to be considered while determining whether the said leadership structure can be relied upon for the purpose of determining which faction represents the real political party, which would be dealt with at the appropriate juncture. The only question which is to be determined in the current part of the order is what and who all constituted leadership structure of Shiv Sena at the relevant time. Respondents have led detailed evidence, and despite being confronted during cross-examinations, they have been able to demonstrate that no organizational elections were held on 23/1/2018. On the contrary, in the affidavit in lieu of examination of Chief of Shri Sunil Prabhu, PW1, has stated that organizational elections were held on 23/1/2013 and 23/1/2018. However, Shri Sunil Prabhu has not claimed any personal knowledge of the same or and whether he was present during the said elections. During his cross-examination, he was confronted with the letter dated 28/1/2013. Thereafter, a specific question was posed to him by Mr. Jethmalani as to whether he voted in the said election, to which he responded in the affirmative. The contents of the said letter clearly stated that all the candidates were declared unopposed. The contradiction was also put to the witness by Mr. Jethmalani in cross-examination. However, no justification for the same was put forth by the witness. In view of the above evidence and records before me, prima facie indicate that no elections were held in the year 2013 as well as in the year 2018. However, I, as the Speaker, exercising jurisdiction under the 10th schedule, has a limited jurisdiction and cannot go beyond the record of the ECI as available on the website, and hence I have not considered this aspect while determining the relevant leadership structure. Thus, in view of the above conclusions, I find that the leadership structure of Shiv Sena reflected in the letter dated 27 February 2018 available on the website of the ECI is the relevant leadership structure which has to be taken into account for the purpose of determining which faction is the real political party. The question whether which faction is the real political party is discernible from this 2018 leadership structure is discussed in paragraph 112 to 131 infra of the present order.
the leadership structure so determined as the relevant leadership structure for the purpose of these disqualification petitions are hereinafter referred to as the 2018 leadership structure. Since in these proceedings, both the factions are claiming to be the real political party, rival factions have emerged in the Shiv Sena. In view of the fact that rival factions have emerged and both the factions are claiming to be the real political party, it is imperative to prima facie determine when did the rival factions emerge. Thus, it is necessary to determine the relevant day on which rival factions emerged before further venturing into which of the faction was the real political party when rival factions emerged. At the outset, I must set straight the point that the determination of the Speaker exercising jurisdiction under the 10th schedule while deciding who the real political party is mandates only a preliminary inquiry which has to be done prima facie by taking into account material officially before the Speaker as the Master of the Legislative Assembly. I shall consider the facts relevant for the determination on what is before me as the Speaker of the Legislative Assembly. As noted by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, on 21st June 2022, there was no material available before the Deputy Speaker to infer the emergence of any rival faction. However, after taking on record the resolution dated 21st June 2022, passed by the SSLP, disputed by the respondents, the very next day, the then Deputy Speaker received a resolution disputed by the petitioner dated 21st June 2022, received by the then Deputy Speaker on 22nd June 2022, contrary to the resolution dated 21st June 2022. Thus, from this fact alone, it is evident that there emerged two factions of the Shiv Sena from 21st June 2022 itself, but the same came to be officially on record of the office of the Speaker and/or Legislative Secretariat on 22nd June 2022. At this juncture, it is imperative to refer to paragraph 119 of Subhash Desai Supra, where the Honorable Apex Court, while discussing the legality of the recognition of leader and the whip of Shiv Sena, accorded by the letter dated 3rd July 2022, held that the Speaker ought to have taken into consideration the split that took place within the Shiv Sena, which were discernible from two sets of resolutions appointing two different leaders and whips placed on the record by Shiv Sena before the Legislature Secretariat. This paragraph into bracket 119 read with Honorable Apex Court's finding recorded by the Honorable Apex Court in paragraph 157 of Subhash Desai Supra makes it clear that the law laid down by the Honorable Supreme Court is that in view of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule, when rival factions emerge as a result of rift/split in the party, the Speaker has to necessarily find which faction is the real political party while recognizing leader and the whip of the party. Thus, in view of the facts recorded in the preceding paragraphs and keeping in view the principles enumerated by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra as recorded in paragraph 84 herein above, I have come to the following conclusion that the emergence of the two factions of Shiv Sena can be inferred from 21st June 2022 itself, and the same came to be a matter of official record of the office of the Speaker and or the Legislature Secretariat on 22nd June 2022. Conclusion: having decided the 1. relevant constitution of Shiv Sena, 2. leadership structure, and 3. the relevant point for the purpose of determining the preliminary issue, I have made the following analysis, observations, and determinations on the preliminary issue of which faction was the real political party when two factions emerged. For the purpose of analyzing, discussing, and determining the issue, the faction of the petitioner is hereinafter referred to as UBT faction, and likewise the respondent's faction is referred to as
the Shinde faction. The applicability of the test of aims and objectives. I am not going into the details of reading the applicability of the test of aims and objectives, because as you are aware that in accordance with the directions of the Apex Court and otherwise, the speaker is not required to get into the political thicket with regards to the aims and objectives of a political party. So I'm restricting it to pronouncement, and you can have a look at it once you apply for the certified copy. The reason why Shiv Sena constitution assumes significance is to analyze whether the question of which faction is the real political party is discernible from the leadership structure identifiable from the said Shiv Sena constitution. So the Shiv Sena constitution is relevant to the extent of identifying the leadership structure. Leadership structure as a criteria to determine who was the real political party. As I have already held, which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shiv Sena to be taken into account for deciding the preliminary issue, I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same. The UBT faction there are submissions made which have been recorded of both the sides, which are at paragraph 113 and 114 of my order. In view of the above recorded submissions of the parties, there emerges two further questions. Whether 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of Shiv Sena. Number two, whether will the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party. So we further have to derive get answers to two more questions. The primary one being whether 2018 leadership structure is in conformity as provided by the constitution, and number two, whether the will of the Paksha Pramukh and or majority of the leaders reflects the will of the political party. As there are contrasting submissions on the question, it is necessary to peruse the SS Constitution and the 2018 leadership structure and then record a finding as to whether the 2018 leadership structure is in conformity with the Constitution of the Shiv Sena. Thus, I have taken a comparative look at the 2018 leadership structure and the SS Constitution and have arrived at the following observations and conclusions. A. 2018 leadership structure mentions Shiv Sena Paksha Pramukh into bracket president as the highest office of the SSPP. However, in the SS Constitution, the highest office of the Shiv Sena political party is Shiv Sena Pramukh, but the said constitution distinguishes highest office and the highest authority and provides that Rashtriya Karyakarni is the highest authority whose decision shall be final. Shiv Sena SS Constitution provides that the members of the Rashtriya Karyakarni shall be called as Shiv Sena leaders and provides for a total number of 19 members, out of which 14 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 5 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages only 13 members in the Rashtriya Karyakarni, out of which 19 are to be elected and the remaining 4 are to be appointed. SS Constitution provides for a total number of 21 deputy leaders, out of which 17 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 4 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leaders structure envisages 33 deputy leaders, out of which
21 are to be elected and the remaining 12 are to be appointed. The 2018 leadership structure provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis secretary, samanvayak and sanghatak. However, the constitution of Shiv Sena provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis president, sarchitnis, general secretary, koshadhyaksha, treasurer. From the observation recorded in the preceding paragraphs, it is evident that the 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena. In view of this finding alone, it could very well be concluded that the 2018 leadership structure, which is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, cannot be taken as the yardstick to determine which faction was the real political party at the relevant point of time. In view of the same, I have come to the conclusion that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide a reliable outcome and or answer the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the said preliminary issue. Nevertheless, I am inclined to look at the second question regarding paragraph 115 herein above, where will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party, so as to not leave any stone unturned in arriving at a decision. The determination of this question arises out of the alternate submissions made by the UBT faction that the 2018 leadership structure has to be taken ex facie, and the determination of which faction was the real political party has to be solely based on the said leadership structure without a comparison of the said structure with the leadership structure provided for the in the constitution of the Shiv Sena. The said proposition would run counter to the principles laid down by the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, where it was specifically provided that the leadership structure which has to be taken into consideration while determining the real political party has to be identifiable by the relevant constitution. Thus, although in the light of my finding on the preceding question, the aspect need not be looked into. However, I intend to look into the said aspect any which way, considering the gravity and importance of the dispute. Hence, following are my observations, findings, and conclusions on the said aspect. UBT faction has submitted that the decision of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party, and thus, if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh constitutes the will of the political party. This proposition is devoid of merit, as I do not find any substance to allow the same. The reason for the same are recorded herein below. The proposition perhaps would have been a valid point if the party president was the sole repository of the decision making with respect of the policy and administration of the party. For analyzing the said submissions, a perusal of the SS Constitution was made. The SS Constitution provided that Rashtriya Karyakarni shall be the highest authority of the party, and its decision in all matters concerning the party policy and party administration shall be final. It is also to be noted that the Paksha Pramukh is only a presiding member of the said highest authority in the party and in no way is the sole repository of decision making in the party. Thus, in view of the same, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. It would be appropriate to note that the SS Constitution does not even have a post called Paksha Pramukh. However, it was argued by the UBT faction that the nomenclature
difference in the 2018 leadership structure and the SS Constitution is not a relevant factor for the purpose of deciding the preliminary issue. Even though I have held in paragraph 117 that 2000 leadership structure is not at all in conformity with SS Constitution, I shall consider this submission. The Constitution of Shiv Sena provides for Shiv Sena Pramukh. The submission of the petitioner that Shiv Sena Pramukh mentioned in the SS Constitution is the same post of Shiv Sena Paksha Pramukh termed in the 2018 leadership structure. By relying on the powers of Shiv Sena Pramukh, it was argued by the UBT faction that he is the authority under the party constitution vested with the powers to remove any member of the party. Thus, it was further argued that an authority who is vested with such power of removal reflects the will of political party with respect to removal of members from and for anti-party activities. However, a complete reading of the said provision in the party constitution reveals that the said submission is factually wrong. The said provision in relation to the powers of Shiv Sena Pramukh clearly provides that such a power is not absolute and it has to be exercised in consultation with the Rashtriya Karyakarani. Further, it has to be noted that such a power is only available to the Shiv Sena Pramukh for the purpose of removal of members mentioned in Article 8, Schedule B of the said Constitution. The said schedule does not deal with leaders of the party. Leaders of the party is given under Schedule A of the said article. Thus, Shiv Sena Pramukh does not have any power to remove any leader of the party. Thus, the submission of the petitioner that Shri Uddhav Thackeray, Vide, letter dated 30/6/2022, had removed Shri Eknath Shinde from the post of Shiv Sena leader cannot be accepted, as such power are not vested with the party president. Hence, on this ground also, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. If this proposition is accepted, then in a situation where the party president, who is also a legislator, itself defects, then he could simply escape the wrath of the 10th schedule by pleading that his decision is the will of the party. Further, if this proposition is to be accepted, it would mean that no member can ever voice concern against the party president, and the party president might possibly be able to seek disqualification against any member who questions his credibility. This would run contrary to the concept of intra-party dissent. In view of the clear and unequivocal finding of the Honorable Supreme Court at paragraph 183 to 190 of Subhash Desai, I will be falling foul of the judgment of the Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan, wherein the constitutional validity of the 10th schedule was itself upheld on the grounds that it is not an anti-dissent law if this proposition is accepted. I shall now proceed to consider whether the will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. An alternate submission was made that even if the Paksha Pramukh is not accepted as the repository of the will of the political party, the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party. This proposition is also devoid of merit, and I do not find any substance in it for following reasons. In a circumstance where there is no dispute amongst the leaders identifiable by the constitution of a political party, the proposition would have held water. However, the factual matrix of the present matter is different. This is a matter where there is a dispute within the leadership structure itself. It is to be noted that in the present matter, rival factions have emerged in the legislature party, political party, and thus inevitably amongst leaders of the party as well.
Thus, it would not be wise to apply this proposition in the present matter. The existence of split-stroke rift in the leadership structure is admitted by the petitioner and/or the UBT faction, as can be inferred from the petitioner's affidavit in lieu of examination in chief of PW1, petitioner himself, that the leader of the UBT faction did not have the support of all the members of the 2018 leadership structure when rival factions emerged. Thus, the submission that the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party could have perhaps be applied in a situation where there is a dispute between some members of the party and the elected leadership. In such a case, the leadership of the party could have possibly taken the stand that their decision would have to be taken as the decision and will of the political party until they are so removed from the leadership structure by a mechanism recognized by the constitution of the said political party. However, as I have noted earlier, in the present matter, rival claims have emerged wherein the leadership structure about the leadership within the leadership structure about the leadership itself. In such a situation, one leader's contention that his will is the will of the political party would be contradiction in terms. Thus, when there is a vertical rift in the party and two factions within the said leadership structure emerge as a result of the said rift, leaders of either faction, both Shri Uddhav Thackeray and Shri Eknath Shinde, could equally claim to represent the will of the political party. In that case, it would not be appropriate to take their decision as the decision that carries the will and wish of the political party when the question of which faction is the political party is being considered. There possibly lies one more aspect which could be considered. Does the stand-stroke decision of the majority members of the leaders within the leadership structure, identifiable and appointed according to the constitution of the political party, could be construed as the will and desire of the political party in the event there is a dispute within the leadership structure? For the purpose of answering this question, one must look into the constitution of the political party. In an event where the party constitution provides for a mechanism to resolve a conflict of decision within the leadership structure, then in that case, it would have been a guiding factor. However, if the party constitution does not provide for such a mechanism, then in that case, it would not be appropriate to say that the decision of the majority leaders would have to be accepted as the one which conveys the will of the political party. This aspect need not be further considered in view of the fact that in any case, UBT faction has not placed any material on record or even suggest that any meeting of the Rashtriya Karyakarni was called for where any decision in relation to the real political party was resolved so as to identify the leaders and/or the whip who carried the will of the political party. Thus, in the absence of any such material, including any majority decision of the Rashtriya Karyakarni in relation to the real political party, identifying the leader and/or the whip who carried the will of the political party would be an impossible task. Any conclusion reached would be without basis in law and evidence of fact. The submission that the UBT faction shall be taken as a real political party is entirely based on the conjuncture that if there will be a decision taken in relation to the political party by Rashtriya Karyakarni, then UBT faction would have had the majority. At this juncture, the petitioner's claim about a meeting purportedly held on 25th June 2022 has to be dealt with. It is the petitioner's case that Rashtriya Karyakarni meeting was held on 25th June 2022 and certain resolutions were passed. In support of this case, petitioner has produced certain resolutions of 25th June 2022. Those documents are disputed by respondents.
Mr. Jetmalani, learned counsel for respondent, objected to the said documents being considered on the ground that they were forged and fabricated, and demonstrated this before me by showing two separate documents, one annexed by the petitioner Shri Sunil Prabhu to his affidavit in lieu of examination of in chief, and the other set of the same documents which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2. In the first set of documents annexed to the affidavit in lieu of examination in chief, termed as minutes of the meeting of Rashtriya Karyakarni, and purportedly 7 resolutions passed in the said meeting. In none of the resolutions there is any signature of any person whose name are shown on the said document. Only on page 105 of Sri Sunil Prabhu's affidavit in lieu of examination in chief, there is a sole signature of Sri Vinayak Raut, who is shown as Shiv Sena secretary. The perusal of the said document shows that the meeting was termed as Rashtriya Karyakarni. In the second set of documents, which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2, the resolutions are shown on different pages, and they are not part of any minutes which was annexed to the affidavit in lieu of examination in chief of Sri Sunil Prabhu. These resolutions are shown on the letterhead of Shiv Sena, Rashtriya Karyakarni Baitak into bracket Prathinidhi Sabha. Petitioner relied on these documents to show that 7 resolutions have been passed, but in none of these documents there is even a single signature, save and except for signature of 2 persons. The name mentioned as proposer and seconder are not even members of Rashtriya Karyakarni, like Shri Rahul Narvekar, who is not a member of Rashtriya Karyakarni, who has stepped into the witnesses and led evidence that there was no such meeting. The same is the case with Shri Vinayak Raut and Shri Arvind Sawant. They are also not members of the said Rashtriya Karyakarni. The petitioner had claimed that the said meeting was held on 25/6/2022 at Sena Bhavan, whereas Shri Uddhav Thackeray claimed that the said meeting was held through video conference. This has been stated by Uddhav Thackeray in his submission before the Election Commission filed on 9/1/2023. This itself casts a doubt on the authenticity of the documents and holding of any such meeting of either Rashtriya Karyakarni or Prathinidhi Sabha. The petitioner himself is not sure whether it was Rashtriya Karyakarni or Prathinidhi Sabha. Thus, in view of the above said documents, the said documents cannot be permitted to be relied on. Petitioner suggests that a look into how the Shiv Sena settled conflict or decisions within the leadership structure in the past might shed some light into this. However, in the present matter, no such material are placed before me to even suggest such instances which happened in the past, where the majority decision within the leadership structure is taken as the will of the political party. It is to be also noted that the petitioner has neither placed nor provided any material to show that historically the decision of the majority within the leadership structure is taken to be the final decision of the political party whenever there was a conflict of decision within the leadership structure. Thus, for this reason also, it would not be appropriate and correct to accept the proposition that the decision of the majority leaders within the leadership structure would have to be accepted as one which conveys the will of the political party. As a passing note, I must also add that the majority rule possibly could have been applied in a normal situation where there is dissent in respect to some policy and or administrative decision of the party. However, such a simple rule / test shall not be applied to determine an essential question in existential question in relation to the political party,
such as in the present matter, where which faction is the real political party is required to be determined. Thus, in view of the decisions recorded herein above, I am not inclined to accept submissions of the UBT faction that will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. Thus, from paragraph 112 to 128, I have dealt with whether the relevant leadership structure read with the Shiv Sena Constitution, SS Constitution, provides answer to the question which faction is the real political party. In view of the same, I record my conclusion and finding thereon as under. The 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena and thus does not provide a reliable outcome and or answer to the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the preliminary issue. Decision of the Paksha Pramukh is not synonymous with the will of the political party and thus if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh cannot be taken as the will of the political party. When there is a vertical rift in the horizontal leadership hierarchy of the political party and both the factions within the said leadership structure emerged as a result claim to represent the will of the political party, it would not be appropriate to apply the test of which of the said faction decision carries the will and wish of the political party. In the case of Shiv Sena political party, will of the majority leaders in the 2018 leadership structure cannot be said to be synonymous with the will of the political party. In view of the findings recorded in the preceding paragraph, I hold that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide any reliable answer to the question which faction is the real political party and consequently the 2018 leadership structure cannot be yardstick to determine which faction is the real political party. With regards to the legislative majority, I am not going to spend much time because that question is rather clear. In view of the above observations and findings, I hold as follows. Which faction is the real political party is discernible from legislative majority which existed when the rival factions emerged. Legislative majority which existed when the rival factions emerged can be discerned and or inferred from 1. The Shinde faction resolution dated 21st June 2022 and 23rd June 2022 available on record of the legislature secretariat and the admitted position which can be inferred from the initiation of petitions against 38 legislators of Shinde faction by the UBT faction. Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. In view of my findings that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged and that Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. ठीक है, तो बड़ा फैसला आ गया है
क्या कहा है राहुल नार्वेकर ने? राहुल नार्वेकर ने कहा है कि शिंदे के पास बहुमत ही नहीं है, बल्कि शिंदे फैक्शन ही असली शिवसेना है। ये किस आधार पर उन्होंने तय किया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने 3 चीजें देखी। शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर देखा, और लीडरशिप स्ट्रक्चर में फैसले कैसे होते हैं, ये तमाम चीजें देखी। अब यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन 1999 का है जो शिवसेना का बना हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन उद्धव गुट लाया था 2018 का संशोधित। इस पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को सही मानेंगे जो ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के पास अवेलेबल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम फाइंडिंग्स का हवाला दिया और एक लंबे 1200 पेज के डिसीजन में वो अब इस बात पर पहुंचे हैं कि असली शिवसेना शिंदे गुट के पास है। शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1999 में, उसके हिसाब से शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि एक उद्धव ठाकरे यूपीटी ग्रुप ने, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने अपने वकीलों के थ्रू कई सारे पेपर सबमिट किए थे, जिन पेपर्स को भी गलत पाया। जो हलफनामे दिए गए थे पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसे गलत पाया। अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी के पास। अंकुर त्यागी, अब तो साफ हो गया कि अजीत पवार भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे इस फैसले के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो रियल पॉलिटिकल पार्टी है, जो शिवसेना है, रियल शिवसेना है, वो है जिसके पास लेजिस्लेटिव जो मेजोरिटी है इस वक्त सदन में। और जैसा कि आज दावा किया था खुद सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह ही दावा किया था कि 67% मेजोरिटी, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी उनके पास है। 75% जो एमपीज हैं वो उनके पास हैं। और इस दावे के तहत बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं कि कहां से शुरुआत हो रही है, क्योंकि लगातार जो बात हो रही थी वो 10th शेड्यूल की हो रही थी। 10th शेड्यूल का पैरा 21B, उसमें साफ तौर पे कहा था कि डिसओबेइंग द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये इसके अंदर एक क्लॉज था। अब ये कहां से आता है, ये बेसिकली आप थोड़ा सा, और मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि शिवसेना पार्टी के अंदर जो बदलाव हुआ, जो उसके संविधान है उसके अंदर जो आखिरी बदलाव हुआ था वो 1999 में हुआ था। तब शिवसेना प्रमुख जो थे उन्हीं को प्रेसिडेंट माना जाता था। तब बाला साहब ठाकरे इस पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे। शिवसेना प्रमुख नाम की टर्म कॉइन की गई थी और तब उसी को माना गया था कि ये प्रेसिडेंट है। इस आधार पे उसको प्रेसिडेंट माना गया। साल 2018 में, ये वो वक्त था, अब बाला साहब ठाकरे मौजूद नहीं रहते हैं, उनका देहांत हो चुका है। अब यहां पर शिवसेना प्रमुख का जो पद है उसको बदल कर दिया गया शिवसेना पक्ष प्रमुख, और इसको एज अ रेफरेंस प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे लिया गया था। लेकिन ये जो बदलाव किया गया था संविधान में, पार्टी के संविधान में साल 2018 में, ये कभी भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां तक गया ही नहीं। और जब वहां तक गया ही नहीं तो इसको एक्सेप्ट करने का जो प्रावधान है वो बनता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आया है। इसके अंदर जो टर्म कॉइन की गई थी शिवसेना प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख, और यहां पर जो एकनाथ शिंदे गुट है उसने अपनी बात रखने की कोशिश करी। इसको कहा गया है लीडरशिप स्ट्रक्चर, यानी जो जिसके बिहाफ में बात की गई, क्योंकि यही व्यक्ति है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला सकता है। उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जिसमें एकनाथ शिंदे और जो बाकी MLAs थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो पूरी तरीके से वो जो पूरा विधान ही है उसको एक तरीके से इलीगल बताया गया है। ये जो आर्गुमेंट मैं अभी थोड़ी देर पहले राहुल नार्वेकर का सुन रहा था उसके मुताबिक। दीपक जी, ठीक है, बहुत तफसील से समझाया आपने अंकुर। मैं सीधे अश्विन पांडे के पास चलता हूं। अश्विन, मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उद्धव ठाकरे फिर एक बार कहेंगे मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ साजिश हुई है, और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि उद्धव के नेता पहले से ही कह रहे थे कि ये फैसला हमारे पक्ष में आने वाला नहीं है। आगे कैसे देखते हैं अश्विन आप राजनीति महाराष्ट्र? जी देखिए, ये कहेंगे नहीं, उद्धव ठाकरे पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो फैसला आना है उनके पक्ष में नहीं आया है। एक दिन पहले सीएम से राहुल नार्वेकर की मुलाकात को लेकर भी वो ये कहते रहे हैं कि जज की मुलाकात क्रिमिनल से हो रही है, जबकि ये मामला जो है क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। ये एक जो है विधायिका से जुड़ा मामला था जिसकी सुनवाई चूंकि जो है राहुल नार्वेकर कर रहे थे।
इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति गरमाएगी। जाहिर सी बात है, उद्धव ठाकरे अपने आप को एक तरह से एक सॉफ्ट टारगेट बताएंगे, एक इमोशन के तौर पर जो है शिव सैनिकों से बातचीत करेंगे जो उद्धव गुट के अभी भी समर्थक हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका है और अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उद्धव गुट अख्तियार करेगा, क्योंकि जो पहले से ही वो दावा कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है, और आज वो स्थिति यहाँ पर निर्माण हो गई है कि फैसला जो है शिंदे गुट की तरफ जाता दिखा है और शिंदे गुट को जो है असली शिवसेना माना गया है, जिसको लेकर अगर हम कहें तो जो सिंबल था वो भी इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को दिया था, साथ ही शिवसेना का जो नाम है वो भी शिंदे गुट को दिया गया और अब यहाँ पर शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना गया। इसमें खास तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो ये कि 2018 का जो संविधान बनाया गया शिवसेना का, उसमें उसका जो प्रति है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे नहीं था, इसलिए 1999 का जो है संविधान था उसे ही माना गया। राहुल नार्वेकर द्वारा जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे अध्यक्ष के तौर पर अश्विन, मैं वैदेही भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, अंकुर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तीनों को एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, कागज पत्री ठीक रखनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में सिखाया था, बेटा कागज पत्री ठीक ठाक रखो। अब 2018 का संविधान अगर इलेक्शन कमीशन के पास होता तो मेरे ख्याल से फैसला दूसरा हो सकता था। तो कागज पत्री ठीक ना रखने का कितना बड़ा नुकसान अश्विन हो चुका है शिवसेना को यहाँ पर कि संविधान में संशोधन तो कर दिया पर इलेक्शन कमीशन को दिया नहीं। जी देखिए, इसको लेकर एक आरोप भी लगातार शिवसेना पर लगता रहा और तमाम ऐसी जो रीजनल पार्टियां हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तौर पर चलाई जाती हैं, जो बीजेपी के नेता लगातार आरोप करते रहे हैं। और खासतौर पे उद्धव ठाकरे या यूं कहें ठाकरे परिवार पर ये आरोप बहुत सालों से लगता है कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई पार्टी नहीं। और शायद इन चीज़ों का संज्ञान जो शीर्ष नेतृत्व था शिवसेना का, उन्होंने उस वक्त नहीं लिया जब संविधान बदला गया। और जैसा आप कह रहे हैं कि कागज दुरुस्त होना चाहिए, वो दुरुस्ती नहीं हुई और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो सारी चीजें नहीं थी और वही सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ पर उद्धव फ्रैक्शन को भुगतना पड़ा। और एक चीज दीपक जी मैं और कहना चाहूंगा, जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, शायद फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था वो शायद कुछ और होता। तो यहाँ पर दो गलतियां, पहले तो आपने इस्तीफा दे दिया जब जो है आपकी जमीन लड़खड़ाने लगी, दूसरा जो है अब जब 2018 के संविधान का आप संशोधन तो करते हैं लेकिन उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचती, जिसका दावा आप कर रहे थे कि पहुंची, लेकिन यहाँ पर वो रिकॉर्ड पे नहीं आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया। ठीक है वैदेही, मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सबके पास चलूंगा। चरण सापरा साहब हैं, विक्रम प्रताप सिंह जी है, प्रणय अजमेरा है, संजय द्विवेदी है। लेकिन वैदेही उससे पहले एक क्विक कमेंट में आपसे चाहूंगा, अब क्या दिखाई दे रहा है विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? कौन जश्न मना रहा है और कौन जो है स्यापा कर रहा है? मुझे पूछा गया है? वैदेही आपसे सवाल पूछा है, क्या हो रहा है विधान परिषद के अंदर फैसला सुनने के बाद? जी बिल्कुल दीपक सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये फैसला आया, इस फैसले में कई सारे मुद्दों को लेकर जो है वो सवालात खड़े कर दिए। हालांकि अभी मैं विधान भवन में हूँ और विधान भवन में हम सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सारे मीडियाकर्मी अब यही राह देख रहे हैं कि अंदर से कौन विधायक बाहर आता है और उनकी क्या राय यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर तैनात भी नजर आ रहे हैं और इसी विधान भवन में जो है वो ऐतिहासिक फैसला जो है वो आज यहाँ पर सुनाई दिया था। हालांकि इस फैसले को लेकर जो है वो उद्धव ठाकरे गुट इन्होंने पहले से ही अनुमान लगाया था कि फैसला क्या आएगा, जिस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो है वो गुहार भी लगाई थी। लेकिन अभी जिस प्रकार का फैसला आया है, शिवसेना के 2018 की जो संविधान है उसको लेकर जो है वो सवालात खड़े किए हैं और इसी बात को खरे नजर उतरते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास जो है वो कोई कॉपी इसकी है ही नहीं और उसी के आधार पर जो है वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने डिसीजन दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है
है वो एकनाथ शिंदे इनके व्हीप को लेकर सवाल खड़े किए थे। भरत गोगावले ये व्हीप नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने जो है वो भरत गोगावले इनकी नियुक्ति को सही ठहराया है। ये एक यहाँ पर जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को लेकर। लेकिन इसी बात को लेकर जो है वो अभी ठाकरे गुट अगले कदम किस प्रकार उठाएगा ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये बात बिल्कुल तय है। सीधे चलता हूं संजय द्विवेदी जी के पास। लीडर है शिवसेना के संजय द्विवेदी जी, कागज पत्री सही नहीं रखने का नतीजा आपने देख लिया। देखिए क्या हुआ आपके साथ। 2018 में आपने संविधान बदला, उसको इलेक्शन कमीशन को पहुंचाया नहीं। देखिए दीपक जी, संविधान बदला नहीं पहुंचाया गया ये तो कहा जा रहा है। बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई थी, जब संविधान चेंज हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, रिकॉर्डिंग भेजी गई थी वहां पे देने के लिए। हमारे 2 सांसद वहां पे गए थे देने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। आज जो फैसला दिया गया ये हम लोगों को मालूम था, क्योंकि जिस तरह से पार्टी तोड़ के सरकार बनाई गई है, तो उसमें अगर ये फैसला है तो कोई इसमें कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि असली शिवसेना इस समय उद्धव ठाकरे की है, आपने जो गलत शिवसेना बना के यहाँ पे रखा। लेकिन आज जो जजमेंट आया मालूम था हम लोगों को, क्योंकि जो आदमी पार्टी तोड़ के सरकार चला रहा है, जो उनके पास नैतिकता नहीं बची है, जिनके पास कुछ नहीं बचा है, तो वो तो इस तरह के फैसले दिलवाएंगे। और नार्वेकर जी जिनका मैं सम्मान करता हूं हाथ जोड़ के, वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, तो वो तो वही करेंगे जो उनके बड़े लोग कर रहे हैं या जो बड़े लोग उनके ऊपर थोप रहे हैं। जिस तरह से उनसे कहा जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, उस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। एक क्विक कमेंट में लेता हूं। शिंदे फैक्शन के जो लीडर है विक्रम प्रताप सिंह जी, आपने नैतिकता छोड़ दी है। दीपक जी, ये लोकतंत्र है। संजय जी को मालूम होना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है पूरा देश चलता है। तो पार्टी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या हमारा जो है विधायिका हो, आज कहीं ना कहीं जो है जो खामियां जो है इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है, वही खामियों के आधार पे धनुष-बाण और शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब को, हमारा शिवसेना हमको मिला जो है। और कहीं ना कहीं आज संख्या बल के आधार पे जो है आज विधान भवन में जो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हैंडओवर किया था जो है विधानसभा अध्यक्ष को, जो कि चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं और कहीं ना कहीं सभी चुने हुए विधायकों के वो अध्यक्ष होते हैं, आज उन्होंने अपना टेक्निकल रूप से जो ठीक है। मैं एक मिनट के लिए विक्रम भाई आपको रोकूंगा। मैं वैदेही के पास चलता हूं, उसके पास कोई अपडेट है? वैदेही क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर राहुल नार्वेकर जो है वो फिलहाल डिसीजन दे रहे हैं। अभी भी उनका डिसीजन जो है वो फिलहाल शुरू है, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर यहाँ पर सामने आई है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है, उनके निर्णय का समर्थन किया है और उनके व्हीप का भी समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर अभी उद्धव बालासाहेब ठाकरे सैनिक है आक्रामक हो चुके हैं, उनकी नाराजगी जो है वो बकायदा दिखाई दे रही है। और यही नाराजगी थोड़े देर में जो है वो शिवसेना भवन दादर के इलाके में दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर कुछ शिव सैनिक जो है वो आंदोलन करने वाले हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने नजर आ रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर शिव सैनिक किस प्रकार अपनी भूमिका रखते हैं और क्या इनके आंदोलन और इनके आंदोलन की वजह से मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या निर्माण होती है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी बात को लेकर जो है वो कल रात को एकनाथ शिंदे इन्होंने बैठक भी बुलाई थी। नई डीजीपी रश्मि शुक्ला जो है वो इस बैठक में शामिल थी। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से वापस शिंदे फैक्शन के सिंह साहब के पास। सिंह साहब अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, जो है आज जो फैसला आया वो हमारे भारत के संविधान के तहत आया है, जिस तहत में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो हैंडओवर किया था विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरा डिटेलिंग करके उन्होंने जो है आज 1200 पेज का अपना निर्णय सुनाया है और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरे देश को, पूरी दुनिया को उन्होंने सुनाया है अपने टेक्निकल पॉइंट्स को। तो भावनाओं के आधार पे ये निर्णय नहीं आएगा। इनको तो लगता है कि घर में बैठ के पार्टी चला लिया, घर में बैठ के जो है सरकार भी चला लेंगे, चलाया भी उन्होंने घर में बैठ के 2.5 साल जो है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है, तो जो निर्णय आया वो जो न्याय उचित, जो टेक्निकल संवैधानिक जो निर्णय आना चाहिए था, वही निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। और बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी यही निर्णय सुनाना पड़ेगा, क्योंकि यही फैक्ट है। आज एकनाथ शिंदे 56 MLA में 40 MLA साहब के पास चलता हूं। साहब
सपरा साहब, यही बहुमत आप तो लेके पहले आए। से ही मैच फिक्सिंग बोल रहे थे, नहीं, दीपक आपको जी, यही 10 उम्मीद थी। सेकंड। आऊंगा संजय द्विवेदी जी आपके पास। नहीं, देखिए, जिस तरह से पता ही था कि ये मैच फिक्सिंग सॉर्ट ऑफ निर्णय आएगा, ये फिर एको आ रहा है। यानी सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, ये सिद्ध हो गया है। लेकिन लोकतंत्र प्रणाली में हमें विश्वास है। लोकतंत्र प्रणाली में जो प्रावधान है वो मेरे ख्याल से शिवसेना उसका वापर जरूर करेगी। जो आज निर्णय आया है उसको पूरी डिटेल में पढ़ करके उसका इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से समझ करके मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाए।